The thought haunts us that the end of the Apollo flights may mark man's last visit to the moon for a long time. एंड देन ही सेज़ कि ये थॉट जो है हमें हॉन्ट कर रही है कि हमारी जो अपोलो फ़्लाइट थी, सीरीज़ ऑफ अपोलो फ़्लाइट्स इन बाय अमेरिका, ये हमारी फ़्लाइट लास्ट थी और हमारे बाद अब कोई मून पे नहीं आएगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. American manned exploration of deep space is scheduled for an indefinite hiatus. So ये जो deep space का जो schedule है, अब ये बहुत लंबे अरसे की gap इसमें आई गई. Most scientists have already suggested that when it resumes, all effort should concentrate upon reaching Mars and beyond. सो एंड ज़्यादातर साइंटिस्ट अब सजेस्ट कर रहे हैं कि जब दोबारा रिज्यूम किया जाएगा स्पेस में फ़्लाइट्स भेजने को, तो नाउ वी शुड ट्राई रीचिंग मार्स एंड बियॉन्ड. So our lunar artifacts bypassed in the race to the planets could remain undisturbed for eternity. So he's saying कि इनके जो lunar artifacts हैं, lunar moon पे जो छोड़े हुए artifacts हैं, वो इसी तरह ही हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि दोबारा मून पे कोई किसी को नहीं वो भेजेंगे. दोबारा मून को स्टडी कर लिया है एक सीरीज़ ऑफ फ्लाइट्स भेज के. अब दे आर गोइंग टू स्टडी द प्लैनेट्स. Clutching the ladder, I raised my eyes from the now familiar moonscape to Earth. Now अब लैडर को पकड़ के अब वो मूनस्केप से दोबारा अर्थ की तरफ देख रहा है. ग्लोइंग इन द बैक हेवंस, जो आसमान में चमक रही है. He can see the earth glowing in the heavens, and that incredible vivid sphere, and this is also a very remarkable. Vivid is very clear, sphere, round shape. Earth को वो कह रहा है, it is blue, beautiful, and our beloved, and it is bedeviled by ecological balances. Bedeviled is constantly change हो रहा है. It's constantly controlled and manipulated by ecological balances going average. Strange तरह हो रहे हैं इसमें ecological changes, by scattered starvation, by shortage of energy that may motivate us to seek sources beyond our earth. लेकिन क्योंकि इसका ecological balance जो है वो भी बहुत imbalance होता जा रहा है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और स्टार्वेशन भी है, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी भी है. तो इन सारी वजूहत की बिना पे भी वी आर लुकिंग फॉर सम प्लेस बियॉन्ड आवर अर्थ कि जहाँ पे हमें कुछ रिसोर्सेज मिल जाएं, आइदर अ लिविंग प्लेस और समथिंग लाइक दिस, बिकॉज अर्थ इज़ very much overloaded by you can say life, by biodiversity, by its ecological balance is going this you can say it's getting overloaded. Our Apollo crew believes that a technology capable of exploring space can and will help resolve such problems. So they believe कि इनके जो Apollo crew है, crew are the members of the Apollo flights, they believe कि टेक्नोलॉजी ऐसी बन सकती है कि हम स्पेस को एक्सप्लोर करें, कोई और हमें लिविंग ऐसी बॉडी मिल जाए जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो, या उससे कुछ उस प्लैनेट से कुछ हेल्प हो सकती हो कि हम अपने एनर्जी क्राइसिस को पूरा कर सकें. We feel a sense of pride in the accomplishments of our program, yet we cannot escape a sense of deep concern for the fate of our planet and our species. So they feel a great sense of accomplishment कि हमने कुछ complete किया है, हमने कुछ study किया है, और लेकिन साथ साथ हमें अपने planet के fate के लिए जो कंसर्न है वो वहीं रहा है, हम उसको escape नहीं कर सकते, और हमारी species भी जो planet में exist कर रही हैं. This concern has led us to add certain items to the equipment we are leaving on the moon. Now they are leaving some equipments on the moon. The sum of these articles we hope will form a resume of our era in the continuing story of human race. So कुछ articles वो छोड़ के जा रहे हैं जो इनका introduction देगी to the coming our era about the human story of human race कि इंसान रहा करते थे. They also went to the moon. In eons to come, eons is indefinite and long period of time to come, जो क्योंकि दुनिया कई billions of years से exist करी और आगे भी we do not know कब तक exist करेगी. So time बहुत vast stretch कर रहा है. आगे ही सेइंग कि जब आगे indefinite period of time तक जब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आएंगे फ्रॉम द डीप स्पेस और फ्रॉम द सोलर सिस्टम इन अदर गैलेक्सीज, या फिर हो सकता है किसी और गैलेक्सी से आएँ और वो इस जगह आएँ, तो दे मे फाइंड you can say they may find their track footprints, their signs, or our abandoned gear. एक
छोड़ के जा रहे हैं वो अब कुछ अपनी चीज़ें. अ प्लेग ऑफ एल्युमिनियम फिक्स्ड. अ प्लेग इज़ यू कैन से ऑर्नामेंटल टेबल छोड़ के जा रहे हैं जिस पे पोर्ट्रे हुए हुए हैं अर्थ के हेमिस्फीयर्स नॉर्थ साउथ. एंड देन upon it are engraved the name of our spacecraft. और टेबल के ऊपर स्पेसक्राफ्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके डेट और मिशन लिखा हुआ है. engraved इज़ एनकार्व हुआ है इस टेबल के ऊपर. इट्स एन ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव टेबल. उनका मिशन और एक रूस्टर ऑफ द क्रू, लिस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स, स्पेसक्राफ्ट के नाम, लिस्ट ऑफ क्रू मेंबर्स और उनका मिशन कि उन्हें किस जगह उतरना था. एंड द डाटा, और उन्हें डाटा क्या क्या किस जगह से क्या डाटा मिला, और इक्विपमेंट्स भी, उनकी लिस्ट भी, और इवन द डायमेंशंस ऑफ आवर फुटप्रिंट्स, और फुटप्रिंट्स की भी रास्ते इस पे लिखे हुए हैं. एंड इंटेलिजेंट बीइंग्स विल रेडिली डिड्यूस व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर्स वी वर. एंड जो जिनको भी मिलेगा इंटेलिजेंट बीइंग्स, दे विल गेस, दे विल अंडरस्टैंड कि हम किस किस्म के इंसान थे. We leave a piece of fauna, a falcon feather and a flora, 4-leaf clover. So एक फूल और एक पत्ता जो है वहाँ छोड़ रहे हैं, और एक falcon का feather as a proof कि ये आए थे यहाँ for other beings who might come in the years later. In a little hollow in the moon dust we place a stylized figurine of a man in a space suit, and beside it another metal plate bearing the names of the 14 spacemen. So और एक हॉलो जो मून की डस्ट थी उस पर उन्होंने फिगरीन ऑफ मैन रखा है. फिगरीन इज़ यू कैन से छोटा सा स्टैचू शेप डेकोरेशन, piece of decoration. It is of a man wearing a space suit. And then on another metal plate, metal decorative table, they have left the name of the 14 spacemen, Russians and Americans, who came to the understand the cosmos. Cosmos is, you can say, the whole universe, so that man may range the cosmos given their lives. So cosmos is the whole universe as a whole. जो भी understand करने आए universe को, they may know about them. And then they deposit the Bible also over there. Our mission ends in fatigue and elation. Now they are tired and they are elated as well. They are feeling very you can say good as well. Amazing success has rewarded the first extended scientific expedition to the moon. So their expedition to the moon, their trip to the moon has been very successful. And after debriefing and helping in the analysis of our findings, our crew disbands. After this briefing, this brief होता है series of questions को answer करना, अपनी सारी findings को बता के और analysis दे के इनका crew जो है members of a certain shape or flight, उनको crew कहते हैं. They disband. Disband is the split. Now 2 years later I continue to work in the Lyndon B. Johnson Space Center near Houston. Frequently I reflect upon those 3 most memorable days of my life. Although I can reconstruct them virtually moment by moment, sometimes I can scarcely believe that I have actually walked on the moon. So he's saying कि I'm still working in a space center, but I cannot forget those memorable 3 days of my life which I spent on the moon, and I often construct them in my memory, and I can sometimes cannot believe, scarcely as I can hardly believe कि मैं moon पे चल के आया हूँ. I have actually walked on the moon. So occasionally, while strolling in a crisp autumn night or driving straight Texas road, I look up at the moon, and proud over the clouds, he often looks at the moon, and my eye picks out the largest circular blotch in the silvery surface, or largest राउंड शेप स्प्लॉच कहते हैं ब्लॉट को. एक धब्बा, एक डॉट तो नहीं, एक बड़ा सा स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट जो मून पे है सबसे बड़ा, उसका है क्या नाम है, मेयर इम्बीरियम. वी हैव रेड इट बिफोर. द लार्जेस्ट प्लेन एरिया ऑन द मून विच इज़ ऑफ अ ब्लैक कलर, इट्स कॉल्ड मेयर इम्बीरियम. दूर से हमें ये ब्लैक कलर जो मून में नज़र आता है, फुल मून के ऊपर एक ब्लैक कलर का सा धब्बा नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड मेयर इम्बीरियम. और वो ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि शायद यहाँ कभी लावा प्लेन गुजरा था और इसीलिए वो जगह ब्लैक कलर की है. There are the eastern edges of that splotch. I once descended in a spaceship, so he can understand दूर से ही देख के मून को कि मैं कहाँ लैंड किया था. Again I feel that I will probably never return, and the thought stirs a pang of nostalgia. और ये सोच के मैं दोबारा कभी वहाँ वापस नहीं आऊँगा, तो इसको फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया होती है. नॉस्टैल्जिया इज़ रिमेंबरिंग द पास्ट
in a sad way. For when I look at the moon, I do not see a hostile empty world. उसको moon को जब भी देखता है एक hostile is unfriendly खाली world नज़र नहीं आता है. He can see a bright body where man has taken his first steps into a frontier that will never end. So he has actually been to the moon. That is why moon उसको एक hostile body, unfriendly body नहीं नज़र आता. It seems something very familiar to him.